paper book. It starts from page 1 and it is till page 13. And what I've done in the summary is I've done two things. The first thing I've done, my lord, is that I've put headings on the various findings, titles on the various findings of the various judgments. And secondly, what I've done is that I've taken one or two extracts from the judgment, not the entire judgment, so that we can finish the entire judgment in, not in a very long time. And your lordship, this judgment was passed in appeal. Yes. And appeal was continuation of your claim. Yes. And you are the only party who claims, यानी आप SIC ने वहाँ claim किया था सीट के. जी. तो आपको मिलने थे या नहीं मिलने? जी जी जी. ठीक. आप मेरा SIC. जी जी. तो वही बात आगे आई. जी. तो हमने भी ये आपको देना था या नहीं देना? जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स आपने फिर एक थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर किया, वो जब मैं जजमेंट पढ़ूंगा. यही है कि जनाब आपने थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर सकते. आपके सामने जो दो पार्टीज थी, जी जी, उन्हें देना था या नहीं देना? जी जी बिल्कुल. तो ये जी आपने इस पे एक्चुअली दो मेजर एतराज हैं. एक आपने बिल्कुल सही कहा कि relief has been granted to a party which according to them was not before the court. I think as far as my understanding, this is the only objection of the सर एक और भी, और जो आपका भी ऑब्जेक्शन है जिस पे आपने डिसेंट किया कि द टाइमलाइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी अमेंडेड. यही भी ऑब्जेक्शन उन्होंने, मेरे ख्याल में ये दो फॉर्मिडेबल ऑब्जेक्शंस हैं जिससे हमें डील करना होगा. बेसिकली दो प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस. तो अभी आप उसको सपोर्ट करते हैं जो इम्प्यून जजमेंट में? जी जी जी. आप उसको सपोर्ट करते हैं कि आपको नहीं दिया गया, किसी पार्टी को दिया गया थर्ड, तो यू सपोर्ट दैट जजमेंट. बेसिकली वो जो 80% सॉरी जी, जो 80% आपने ज्वाइन किए थे जी, उनको क्या कहना चाहिए कि आपसे डिटैच किया गया. जी. यू सपोर्ट दैट आल्सो? यस यस. एंड एक और चीज भी आपने बताया. जी सर. जी सर. ये बात हमें समझानी है आपने कि जितनी सीट्स हैं, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये आर्टिकल 151D के तहत कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी? क्या इनमें से कोई सीट खाली भी छोड़ी जा सकती है, या तमाम के तमाम इन एनी केस किसी भी सूरत में उनको उन पार्टियों में तकसीम का फार्मूला हम आपसे सुनना? जी सर, आई थिंक देयर आर टू थिंग्स ऑन विच देयर इज कंसेंसस अमंग ऑल 13 जजेस. The first thing is that I am out. Sadly, I am out. ठीक है ना? The second consensus, which is among all 13 judges, is that the seats cannot be left vacant. Even the majority judges, the 8 majority judges hold that they cannot be left vacant. So, what do you say? कि आप ये मानते हैं कि ये खाली नहीं छोड़ी जा सकती? Sir, I support the judgment. So my own view doesn't matter, but I support the judgment. You accept that? Yes, yes, of course, of course. So, so my lord, if your lordships may kindly see page 1 of the paper book. ये भी दे दें. There is a second paper book which I have which I am giving. This relates, my lord, to the law on one critical point. This relates to the documents. असल में जिस तरह judges who were there are aware of the fact. You start from the question of law. Yes, yes, जी. More convenient for the bench. जी. Sir, ये जो है ना, ये जितने भी मेरे ख्याल में क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल रिकॉर्ड का पार्ट थे, वो मैंने एक जगह कर दी. बिकॉज इंस्टेड ऑफ योर लॉर्डशिप्स कॉलिंग फॉर द इंटायर रिकॉर्ड, एंड मैं डिफरेंट पेपर बुक से आपको बताऊं, मैंने एक जगह कर दिया विच आई विल बी रिफरिंग टू. बट लेट मी कम बैक टू दी इम्प्यून जजमेंट. अगर आप ये जो अब इस पे CMA नंबर तो नहीं लगा, तो इसे क्या पेपर बुक नंबर 2 कर लें या नंबर, क्योंकि फिर आप रेफर कर. अच्छा, इस पे CMA नंबर लग जाएगा? ये लग जाएगा सर. एंड नन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स सर, नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट इज आउटसाइड द ओरिजिनल रिकॉर्ड. सब उस रिकॉर्ड से हैं, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए एक जगह कर दी. नाउ इफ आई मे स्टार्ट विद योर लॉर्डशिप्स परमिशन एंड योर लेडीशिप्स परमिशन, अगर आप पेज 1 देख लें. पेज 1 ऑफ पेपर बुक 1. नाउ आई विल स्टार्ट सर
from the majority judgment. Now, the majority judgment, my lord, is of 8 judges authored by His Lordship Justice Syed Mansoor Ali Shah. There are concurring judges. There is no separate note in terms of the majority judgment, but there are concurring judges, including His Lordship Justice Mazhar and His Lordship Justice Hassan and Justice Aisha, the invisible member of the bench, if I may say. So, जो पहला point है sir, the entire judgment is based on certain foundational constitutional principles. ये मैं पढ़ चुका हूँ. I move on. जो second point है वो important है. Comprehensive judicial inquiry into all the relevant facts and law points concerning this election dispute is required. Now, एक objection ये भी raise हुआ था कि how were documents considered which were really not part of the original record before the appeal, sir. So this section deals with that. Now on this issue, 11 of the judges were in agreement that they called for the record and examined the document, and on the basis of the examination of those documents came to the conclusion that, as I will explain later, that PTI affiliated candidates participated in the election, they won elections on seats, and they are entitled to reserve seats. But I've read this para, so I move forwards. Para 3. Claims of SIC and PTI not conflicting claims with regards to reserve seats. I will also not read this because I've read this on the last date of hearing. But I move forward, sir. Page 2. How can you say that their claims are not different? You are a separate party, that is. Sir, हमें उसमें नहीं जाएंगे कि आपका आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन papers पे you are separate party and PTI is separate party. Sir, there is no denial of the fact. No, there is no denial of the fact, but it explained in the. Your interest may be same. जी, हमारा interest same था. ये बिल्कुल सही आपने निचोड़ दिया, ठीक है ना? ये है मेरा case. Both have different registration, both have different but interest constitution, bylaws of their parties. But in this case, as far as reserve seats are concerned, our interest was the same. We were not conflicted in terms of whoever got the seats. अब complete कर लेंगे तो फिर लास्ट में yes. But of course, the minority. मैं पढ़ लूँ ये सर? पढ़ लूँ जी. Para 3 पढ़ दीजिए. जी sir. It may also be pertinent to mention here that in the course of his argument, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, which according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench reproved him, questioning how he could make conflicting arguments as he was supposed to plead the case of SIC, not of PTI. With respect, we say that both SIC and PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led the returned candidates to join SIC. In no way did they make any conflicting assertions. Both emphasize that it is the right of the people who had voted for the returned candidates that their mandate should be reflected in allocating the disputed reserved seats to SIC or to PTI. यहाँ पे ये बात की गई है, peculiar circumstances led the returned candidates to join SIC. Whether any single candidate came forward or किसी ने बात की कि I was compelled, this was the peculiar circumstances which compelled him or her to join certain parties.